Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. So, let us start our meditation. Sit back comfortably. Breathe in. And as you exhale, remove all the tensions and worries. Let your mind and body relax. Now, as you take a deep breath in, grateful for this precious that is your breathing. Yesterday we understood that we take our breathing for granted. Even it is the most important thing for us to be alive. God has provided us sufficient amount to breathe. Take a moment to rejoice as you breathe. Feel the air coming from your nostrils to your lungs, energizing your brain and every part of your body. For this breathing, be grateful 1. My to child does God. not study. As God has provided us every basic necessities to live, to strengthen our connection. Look around you and be grateful for each and every. Be grateful for your body. Be grateful for your mind, your intellect. Be grateful for your soul, which is a part of the Supreme Soul. Say, I trust you, God. I trust you and surrender. Surrender the uncontrollables. Surrender the worries. Have faith upon God. Say, everything happening is for my benefit.
Out of this experience, only good will come to me. Surrender the outcome. Surrender your plans in God's hand and say, God, I trust. Throughout the day, being this consciousness of faith, surrender, of unshakable faith and gratitude towards God, but remember to do your good, to perform your actions also in the remembrance of God. Thank you, thank you. Om Shanti. Now, let me share the screen with you all. Today we will read from I find that most bladder problems come from being pissed off, usually at a partner. Something makes us angry that has to do with our femininity or our masculinity. Women have more bladder problems than men because they are more prone to hide their hurt. Vaginitis again usually involves feeling romantically hurt by a partner. Men's prostate problems have to do with self-worth and also believing that as he gets older, he becomes less of a man. Impotence has fear and is sometimes even related to spite against our previous mate. Rigidity that comes from fear or a belief that it is wrong to enjoy the body. It also comes from self-disgust and it can be intensified by an insensitive partner. PMS, premenstrual syndrome, which has reached epidemic proportions, is concurrent with the increase of media advertising. These ads continually hammer home the concept that the female body must be sprayed and powdered and torched and overcleansed in numerous ways to make it even barely acceptable. At the same time that women are coming into their own as equal beings, they are also being bombarded negatively with the idea that the feminine processes are not quite acceptable. This notion, combined with the tremendous amounts of sugar being consumed today, creates a fertile breeding ground for parents. The feminine processes, all of them, including menstruation and menopause, are normal, natural processes. We must accept them as that our bodies are beautiful, magnificent, and wondrous. It is my belief that venereal disease is almost always sexual guilt. It comes from a feeling, often subconscious, that it is not right to express ourselves sexually. A carrier with a venereal disease can have many partners, but only those whose mental and physical immune systems are weak will be susceptible to it. In addition to the old standards in recent years, the heterosexual population has created an increase of faults. This is a disease that comes back again and again to punish us for our belief that we are bad. Herbs has a tendency to flare up when we are emotionally upset. That tells us a lot right there. Now let's take same theory over into the gay community, where they have all the same problems everybody else has, plus much of society pointing their fingers at them and saying that. Usually their own mothers and fathers are also saying, you're bad. This is a heavy load to carry, and it's difficult to love yourself under these circumstances. It is not surprising that women were amongst the first to experience the dread disease AIDS.
In heterosexual community, many women dread growing old because of the belief system they have created around the glory of youth. It is not so difficult for the men, for they become distinguished with a bit of gray hair. The older man often gets respect and people may even look up to him. Not so for most gay men, for they have created a culture that places tremendous emphasis on youth and beauty. While everyone is young to start with, only a few fit the standard of beauty. So much emphasis has been placed on the physical appearance of the body that the feelings inside have been totally disregarded. If you are not young and beautiful, it's almost as though you don't count. The person does not count, only the body counts. This way of thinking is a disgrace to the whole culture. It is another way of saying he is not good enough. Because of the ways gay people often treat other gays, for many gay men, the experience of getting old is something to dread. It is almost better to die than to get old, and AIDS is a disease that often occurs. Too often gay men feel that when they get older, they will be useless and unwanted. It is almost better to destroy themselves first, and many have created a destructive lifestyle. Some of the concepts and attitudes that are so a part of the gay lifestyle being attract the constant judging, the refusal to get close to another, and so on, are monstrous. And AIDS is a monstrous disease. These sorts of attitude and behavior patterns can only create guilt on a very deep level, no matter how much we may campaigns, which can be such fun, can also be extremely destructive both to givers and recipients. It is another way of avoiding closeness and intimacy. In no way am I trying to create guilt for another. However, we need to look at the things that need to be changed in order for all of our lives to function with love and joy and respect. 50 years ago, almost all gay men were closeted, and now they have been able to create pockets in society where they can at least be relatively open. I feel it is unfortunate that much of what they have created gives so much fame to their gay brothers, while it is often deplorable that the way straight street gays, it is tragic the way many gays treat other gays. Men traditionally have always been homosexual partners and women and when men get together. Of course, there will be a great deal more sex. That's all fine and good. The flat houses fulfill a wonderful need unless they are using our sexuality for the wrong reasons. Some men like having lots of partners to satisfy their deep need for self-esteem rather than for the joy of it. I do not believe there is another wrong with having several partners and the use of alcohol and some recreational drugs on an occasional basis is fine. However, if we are getting bombed out of the heads every night, and if we need several partners a day just to prove our self-worth, then we are not coming from a nourishing space. We need to make some mental changes. This is a time for healing, for making whole, not for condemnation. We must rise out of the limitations of the past. We are all divine, magnificent expressions of life. Let's claim that now. तो कल के जो कुछ पैराग्राफ्स थे लास्ट के और आज जो अभी तक हमने पढ़े उन सब में हमें क्या पता चल रहा है कि पहली चीज तो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। हमें खुद को एक्सेप्ट करना है हम कैसे भी हैं। तो उसके लिए जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है या फिर जो भी बाहर से आपको नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि आप गुड इनफ नहीं हो या फिर कोई खराब ट्रीट भी कर रहा है, तो इन सारी चीजों को हमें निकाल देना है, अपने अंदर में नहीं घुसाना है, क्योंकि हमारे माइंड में जो थिंकर है, सोल थिंकर, वो हम खुद ही हैं। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है जैसे हम हैं और खुद के लिए सेल्फ लव रखना है। द सेल्फ लव सेल्फ एक्सेप्टेंस ये प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज, हमारे साथ में कुछ भी गलत है ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हम डिवाइन मैग्निफिसेंट बीइंग्स हैं और हर एक क्रिएचर का क्रिएटर तो गॉड है, तो उनसे तो गलती नहीं हो सकती है। इसलिए खुद को कम ना समझे।
सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें और मेंटल चेंजेस जहाँ पे नेसेसरी हो वो लेकर आए। यहाँ पे ऑथर ने जैसे ये भी बोला कि कुछ लोग पार्टनर्स बहुत चेंज करते हैं सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ को प्रूव करने के लिए। तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि सेल्फ लव कम्स फ्रॉम विद इन। जब हम खुद अपने लिए स्टैंड लेंगे ना और खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो उससे ही हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी। दूसरे के अप्रिशिएट करने से नहीं पता चलेगी। तो ये जो अपनी इनर वैलिडेशन है इसको आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं खोजना है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द कोलोन represents our ability to let go, to release that which we no longer need. The body being in the perfect rhythm and flow of life needs a balance of intake, assimilation, and elimination. It is only our fears that block the releasing of the old. Even if constipated people are not actually stingy, they usually do not trust that there will ever be enough. They hold on to old relationships that gave them pain. They are afraid to throw out clothes that have been in the closet for years because they might need them someday. They stay in stifling jobs or never give themselves pleasure because they must save for that rainy day. They do not rummage in last night's garbage to find today's meal. Learn to trust the process of life to always bring you what you need. इधर पे कॉन्स्टिपेशन का बताया गया है कि ऑथर के हिसाब से कि जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं वो लोग ओल्ड रिलेशनशिप्स को होल्ड ऑन करते हैं। वो हर चीज में यही सोचते हैं कि उनके लिए एनफ चीज नहीं होगी। तो वो ऐसा उनका बिलीफ सिस्टम रहता है इसलिए वो हर चीज होल्ड ऑन करके रखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पुराने कपड़े हो, चाहे उनकी जॉब्स हो। तो वो खुद को प्लेजर नहीं लेने देते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दिया ऑथर ने कि हम रात के खाने के गार्बेज में आज का खाना तो नहीं पूछते हैं ना। तो इसके लिए क्या करना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस ऑफ लाइफ को कि हमें जो चीज चाहिए वो हमें मिलेगी। तो इस बिलीफ सिस्टम के साथ में हमें रहना है। Our legs carry us forward in life, yet problems often indicate a fear of moving forward or a reluctance to move forward in a certain direction. We run with our legs, we drag our legs, we pussyfoot, we are knock-kneed, pigeon-toed, and we have big, fat, angry thighs filled with childhood resentments. Not wanting to do things will often produce minor leg problems. Varicose veins represent standing in a job or place that we hate. The veins lose their ability to carry joy. Are you going in the direction you want to? तो लेग्स के लिए बताया गया है कि लेग्स हमें अपने जीवन में आगे बढ़ा रही है। तो लेग की प्रॉब्लम ये इंडिकेट करती है कि हमें डर है आगे बढ़ने से या फिर किसी सर्टेन डायरेक्शन में बढ़ने से। और थाइज में हमारे चाइल्डहुड रिजम्बलेंस भी होते हैं। तो ऑथर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या आप उसी दिशा में जा रहे हो जहां आप जाना चाहते हो। तो अपनी लाइफ में एक बार एनालाइज करेंगे सिचुएशंस को कि आप जो कर रहे हो क्या आप वही करना चाहते हैं। क्या सोचेंगे। Knees, like the neck, have to do with flexibility. Only they express bending and pride, ego and stubbornness. Often when moving forwards, we are fearful of bending and we become inflexible. This stiffens the joints. We want to move forward, but we do not want to change our ways. This is why knees take so long to heal. Our ego is involved. The knees take a long time because we get our pride and our self-righteousness involved. The next time you have a knee problem, ask yourself where you are being self-righteous, where you are refusing to bend. Drop the stubbornness and let go. Life is flow, life is movement, and to be comfortable, we must be flexible and move with it. A willow tree bends and sways and flows with the wind and is always graceful and at ease with.
तो जो हमारी नीड्स होती है उनको हील होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीड्स के साथ हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ राइटियसनेस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। हमारी ईगो इन्वॉल्व होती है इस वजह से। नीज से हम बेंड भी करते हैं, तो अगर नी में किसी को प्रॉब्लम है तो उसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सेल्फ राइटियस खुद को समझता है और उसे बेंड होने में दिक्कत होती है। तो लाइफ के, अगर हमें लाइफ फ्लो में है, उसके साथ में हमें फ्लो करना है, तो हमें उसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जैसे कि कोई ट्री होती है, विडो ट्री, वो बेंड भी करती है और विंड के साथ मिस वे और फ्लो करती है, वो हमेशा ग्रेसफुल होती है और एट ईज भी होती है। तो हमें भी उस तरह से फ्लेक्सिबल रहना होगा। Our feet have to do with our understanding of ourselves and of life's past, present and future. हमारी फीट क्या इंडिकेट करती है? हमारी जो खुद की अंडरस्टैंडिंग है, हम बारे में कितना अंडरस्टैंड करते हैं, इस लाइफ के बारे में कितना अंडरस्टैंड करते हैं, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है उसके बारे में। Many old people have a difficult time walking. Their understanding has been warped and they often feel there is no place to go. Little children move on happy, dancing feet. Elderly people often shuffle as if they are reluctant to move. छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही हैप्पीली डांसिंग फीट के साथ में मूव करते हैं, लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं उनको डिफिकल्टी होती है क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वाप हो चुकी है और वो ऐसा भी फील करते हैं कि कोई जगह ही नहीं है जाने के लिए। Our skin represents our individuality. Skin problems usually mean we feel our individuality is being threatened somehow. We feel that others have power over us. We aren't thin-skinned. Things tend to get under our skin. We feel skinned alive. Our nerves are right under our skin. One of the quickest ways to heal skin problems is to nurture yourself by saying in your mind, I approve of myself several times, several hundred times a day. Take back your own power. स्किन हमारी इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है और स्किन प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि हमें लगता है हमारी इंडिविजुअलिटी थ्रेटेंड है, किसी और के पास में हमसे ज्यादा पावर है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो ऑथर ने इसका एक क्विक सोल्यूशन दिया है कि आप सेवरल हंड्रेड टाइम्स अ डे खुद के लिए आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, और इससे आपको बहुत जल्दी हीलिंग होगी। Accidents are no accident. Like everything else in our lives, we create them. It's not that we necessarily say, I want to have an accident, but we do have the mental thought patterns that can attract an accident to us. Some people seem to be accident prone and others go for a lifetime without ever getting a scratch. Accidents are expressions of anger. They indicate built up frustrations resulting from not feeling the freedom to speak up for one's self. Accidents also indicate rebellion against authority. We get so mad we want to hit people and instead we get hit. When we are angry at ourselves, when we feel guilty, when we feel the need for punishment, our accident is a multiple way of taking care of them. It seems as though any accident is not our fault, that we are helpless victims of a quirk of fate. An accident allows us to turn to others for sympathy and attention. We get our wounds bathed and attended to. We often get bed rest, sometimes for an extended period of time, and we get pain. Where this pain occurs in the body gives us a clue to which area of life we feel guilty about. The degree of physical damage lets us know how severely we felt we needed to be punished and how long the sentence should be. तो एक्सीडेंट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि एक्सीडेंट्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर। जब हमारे अंदर बहुत गुस्सा होता है, हमें नीड होती है पनिशमेंट की, हमें ऐसे लगता है कि हम किसी पे गुस्सा करें, तो ये सब चीजें जो है सबकॉन्शियसली हम एक्सीडेंट को क्रिएट कर देते हैं और एक्सीडेंट की वजह से
हमें दूसरों की सिंपैथी और अटेंशन मिलती है, और जो हमारे मूड्स है उनको अटेंड करने वाला भी वो मिलता है। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है उसमें हमें पेन मिलता है, ताकि कि पेन हमें क्लू देता है कि हमें अपनी लाइफ के कौन से एरिया को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। Anorexia bulimia is denying the self-life, an extreme form of self-hatred. Buddhist nourishment on the most basic level. Why would we deny yourself nourishment? Why do you want to die? What is going on in your life that is so awful that you want to get out completely? Self-hatred is only repeating a thought you have about yourself. Thoughts can be changed. जब कोई अपनी खुद की लाइफ को एंड करना चाहता है, तो ऑथर उसके लिए क्वेश्चंस रख रही है कि जब फूड नरिशमेंट हमें प्रोवाइड करता है मोस्ट बेसिक लेवल में, तो हम खुद को क्यों डिनाई कर रहे हैं उस नरिशमेंट से? क्यों हम मरना चाहते हैं? हमारी लाइफ में ऐसा क्या है जो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से उससे बाहर आना चाहते हैं? तो सेल्फ हेट्रेड का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक थॉट होती है जो हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, और उसको ही हम हेट कर रहे हैं। और थॉट्स को तो हम चेंज कर सकते हैं, तो फिर अपनी लाइफ को पिकअप करने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। अपने बस थॉट्स को हम चेंज करेंगे और हमें इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। What is so terrible about you? Were you reared in a critical family? Did you have critical teachers? Did your early religious training tell you that you were not good enough as you are? So often we try to find reasons that make sense to us for why we are not loved and accepted just as we are. Because of the fashion industry's obsession with slenderness, many women who have as their main messages, "I'm not good enough, what's the use?" will use their bodies as a focal point for self-hatred. On one level, they are saying, if I were only thin enough, then they would love me. But it doesn't work. This thing works from the outside. Self-approval and self-acceptance are the key. अगर कोई खुद के बारे में कुछ चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने बॉडी के बारे में, और थॉट्स ज्यादातर ऐसे ही आते हैं ना कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज ठीक हो जाए तो सब सही हो जाएगा, अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, और वो चीज होने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो ऑथर कह रही है कोई भी चीज बाहर से काम नहीं करती है। सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ एक्सेप्टेंस यही कीज है। आप खुद को अप्रूव करें, खुद को एक्सेप्ट करें, तब सारी चीजें काम करने लगेंगी। Arthritis is a disease that comes from a constant pattern of criticism. First of all, criticism of the self, and then criticism of other people. Arthritic people often attract a lot of criticism because it is their pattern to criticize. They are cursed with perfectionism. They need to be perfect at all times in every situation. Do you know of anyone on this planet who is perfect? I do not. Why do we set up standards that say we have to be super person to be barely acceptable? It's such a strong expression of not being good enough and such a heavy burden to carry. यहाँ पे आर्थराइटिस का बताया जा रहा है। आर्थराइटिस एक डिजीज जो है वो क्रिटिसिज्म से आती है, जब हम कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करते हैं, पहले खुद को और फिर दूसरे लोगों को। और ये एक परफेक्शनिज्म का कर्ज होता है, जिस वजह से लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मैं सब कुछ परफेक्ट ही करूँ। पर इस दुनिया में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये परफेक्शनिज्म वाला रहता है। तो इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। अस्थमा because you smother love. There is a feeling that you do not have the right to breathe for yourself. Asthmatic children often have overdeveloped consciences. They take on guilt feelings for whatever seems wrong in their environment. They feel unworthy of self punishment. अस्थमा का मतलब अस्थमा को स्मॉदर लव भी बोला जाता है,
और ये क्यों होता है? क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें राइट टू ब्रीथ नहीं है, उनके पास ये राइट नहीं कि वो सांस ले सके, वो खुद को अ, बहुत ज्यादा वो गिल्टी होते हैं अंदर से, अनवर्दी वो फील करते हैं। तो ये सारी क्या है, बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे अंदर ये फीलिंग्स होती है जो कि हमें डिजीज के रूप में आकर के क्लू देती है हमें कहाँ कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, हमें क्या चीज हील करने की जरूरत है। जियोग्राफिक क्योर sometimes work with asthma, especially if the family does not go along. Usually, asthmatic children will outgrow their disease. This really means they go away to school, get married, or leave home somehow, and the disease dissolves. Oftentimes, later in life, an experience will happen that pushes an old button within them and they have another attack. When that happens, they're not really responding to the current circumstances, but rather to what used to go on in their childhood. तो एक बार हीलिंग होने के बाद में भी वो चीज वापस से आ सकती है, वो हमें सबकॉन्शियस लेवल पे उसे हील होनी चाहिए। ये बाकी चीजों के लिए भी है। तो अपनी जो भी डिजीज है, जैसे बोला जाता है ना, हर एक चीज हमारे भले के लिए ही होती है। तो यहाँ पे कितने अच्छे से ऑथर ने हमें समझाया है कि क्या क्या क्लूज होते हैं, किस वजह से हमें डिजीज आती है कोई भी। तो इनको देखें, इन बातों को पढ़े और सोचें कि अपनी लाइफ में क्या क्या एरियाज हैं, कौन से फील्ड्स हैं जिनको हमें हील करना है। Boils and burns, cuts, fevers, sores, itis, and inflammations are all indications of anger expressing in the body. Anger will find its way to express no matter how much we try to suppress it. Steam that is built up must be released. We fear our anger lest we destroy our world. Yet anger can be released as simply as saying, I am angry about this. True, we can't always say this to our bosses. We can, however, beat the bed or scream in the car or play tennis. These are harmless ways to physically releasing anger. Spiritual people often believe they shouldn't get angry. True, we are all working toward the time when we no longer humanize for our feelings. But until we are there, it is healthier to acknowledge what we do feel in the moment. ये कितना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एंगर के बारे में। ये जो बॉयज बर्न्स इन्फ्लेमेशन कट फीवर जो भी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में एंगर की वजह से है। जैसे कि अगर हम कुछ गर्म करते हैं तो इसका जो भाप होता है, उसकी जो स्टीम होती है वो निकलती है ना, वैसे ही अगर हम अंदर से एंग्री हो रहे हैं और हम उस चीज को अपने से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो वो बाहर तो आएगी किसी न किसी रूप में। तो उससे अच्छा क्या होगा कि हम खुद उसको रिलीज कर दें। तो ऑथर ने कितना सिंपली बोला है, हम सिंपली कह सकते हैं आई एम एंग्री अबाउट दिस। किस वजह से आप एंग्री हो, आप उस चीज को बोल दो। पर हर जगह हम ये चीज नहीं कर सकते, हर किसी को हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए हार्मलेस वेज क्या क्या बताए गए हैं कि आप टेनिस खेल सकते हैं, बेड को बुक कर सकते हैं, कार में स्क्रीन कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत हार्मलेस तरीके हैं कि हम एंगर को रिलीज करते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा वो ये है, स्पिरिचुअल पीपल ऑफन बिलीव दे शुडंट गेट एंग्री। जो लोग भी स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन की तरफ ज्यादा जिनका झुकाव होता है, उनके अंदर ये भावना आती ही है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अध्ययन उनके लिए कह रही है कि हाँ ये सच है, हम सब उस टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं कि जब हम दूसरों को कभी ब्लेम ना करें अपनी फीलिंग्स के लिए। हम सब ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम ऐसे नहीं बन जाते तब तक हमारे लिए क्या हेल्दी है कि हम एक्नॉलेज करें जो भी हमारे मन में फीलिंग आ रही है, उस चीज को एक्नॉलेज करना हमारे लिए हेल्दी है।
तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपना सेशन। और आज का होमवर्क ये रहेगा कि अपने अंदर जो फीलिंग्स चल रही है, एंगर, जेलसी, सेल्फ क्रिटिसिज्म, चाहे जो भी फीलिंग्स चल रही है, उन चीजों को हमें रिलीज करना है। अब रिलीज करने के लिए पहले उसको हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज चल रही है। ऐसे ना सोचे कि मैंने तो ऐसे सोच लिया है, तो फिर बुरी बात है। ऐसा ना सोचे। जो फीलिंग आ रही है इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे अंदर में ये चीज चल रही है। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं कहीं। सो थैंक you so much. Tomorrow we will start from Cancer.